Abiha and some SK. Who is SK? Please introduce yourself. Abiha, please introduce yourself briefly before we start the class. Am I audible to you guys? Abiha and SK? I think, please introduce yourself before we start the class. Okay. Okay. Fine. ठीक है. Okay, wonderful. ठीक है. Now yesterday we had studied a little bit about, we had oriented ourselves towards what we're going to study. Okay. And today we will start with geography. But before that, have you aligned your schedules? As I told, started reading newspapers already? Yes, sir. Okay, all of you? Please confirm. Let's be participative first 5 to 10 minutes. Let's have a small discussion before I start the lecture. You can put your audio on for a while. Arun, which newspaper are you reading? I had not yet started, but I am going to start the Hindu. Okay. And Yes. Sarvesh? Sir, I read the Hindu every day. Okay, you read the Hindu. And Zubin, Vishwajit? I have not read yet. I read the Indian Express. Indian Express, okay. And Saurabh, Shubhankar? Not yet, sir. Sir, Have not going to So start with what is stopping you from starting with the newspaper? I think yesterday we made a timeline and we made a plan. So it is very important to adhere and stick to that program. Okay. So the first thing, that is on a daily basis, some things are non-negotiable. उसमें number 1 जो non-negotiable चीज है, that is your, please avoid a background disturbance as well. Daily newspaper is the most non-negotiable thing that you need to follow every day. Okay, is that clear? yes, sir. Yeah. Yes, sir. Apart from that, since we are covering GS, so at least 2 hours you have to read your optional. These two things you should be doing alongside, apart from the classes, revision, attending the classes and revising the classes, and these two things are very, very important. So don't think that I won't be asking this. I want more active participation from you guys. I want you to be actively participant. Otherwise, there is no point. I'm not going to let you. यहाँ हम सत्संग सुनने नहीं आए हैं. This is not going to be a satsang. सुना गए. Every day I'll be asking questions. What is taught in the earlier class, and you will have to be on your toes. All right. Please put your videos and audios on for a while so that I can see all of you. Good evening, Major Anubhav. How are you? Jain sir, I'm good. So how is it? Jai Hind. I think there were some issues with the connectivity. In the morning, I faced some issues. So now it is resolved, sir. Okay. I think they were telling me about that thing, so I think that's sorted now. Actually, because of the advanced meeting, sometimes passcode issue happens. So that will be. Yeah. And Aditi, what about you? Have you been reading the newspaper?
So I have not yet started, but I'll be reading the Hindus. I'll take the subscription of it. Tomorrow before the class, in the class, I will not allow you to attend the class if you are not reading the newspaper. Okay, sir. That's the very strict warning to all of you. That's the Okay, bare sir. minimum I require, right? Anjali, Kajal, Still not started yet, but we'll start from tomorrow. before tomorrow's class, that should be done. Kajal, what about you? Yes, sir. I read the Hindu. Okay, good. Sunidhi, So I have not started reading newspaper. I have started reading magazine. okay. So I think you are a new student today. Please introduce yourself. My- Which attempt you are giving, and what is your educational background? My name is Sunidhi. Right now I am doing masters from distance in political science, Okay. and Written any attempts? I am thinking of 2025 if preparation goes. No, there are no ifs and buts. In this program, there are going to be no ifs. You have to be absolutely certain and sure about that you are going to write the exam, and that is how you will be going to put your best effort. Okay. So make up your mind before tomorrow and start reading newspapers. How about you, Mayuri? Sir, I haven't read, but I'll read in the evening. I think I had an interview with you before. I guess you were Yes, the sir. girl from Jamnagar, right? Jamnagar Alliance, if I can remember. Yes, yes, Okay. sir. Okay, good. Shivdat ji, what about you? Sir, I will start on tomorrow onwards. Tomorrow onwards, I will not hear any excuses. Shubhankar, what about you? Yes, sir. Shubhankar? Sir, sir, from tomorrow onwards, sir. Okay. And Abhiha and SK and Yash, what about you guys? Yeah, Yash, what about you? Please introduce yourself because since it's your first. Sir, I am new here and I got to know about the program today itself only. Okay, wonderful. So Yeah, yeah. are you reading the newspapers? Not yet, sir. ओके हमें मुहूर्त तो नहीं निकलवाना पड़ेगा आप सबके लिए। आप कल न्यूज़पेपर आप पढ़ के आइए और जी मैं सर। पूछूंगा भी न्यूज़पेपर में भी सवाल पूछूंगा आपको, ठीक है? आई थिंक मोर और लेस एवरीवन इज सॉर्टेड. सो दिस इज to make sure that all of us are on board with this, and there is going to be no laxity on that one. And in the orientation class, I have told you also how to effectively read the newspaper in 45 minutes. So that also should be followed. It should be like Major Anwar will vouch for me. When we go on a mission, it has to be, we filter out the non-essential things and we focus on the tasks that are assigned. So reading the newspaper, you should be on a mission mode. Okay. You should be targeting and focusing on only the things that will be relevant to you to qualify the examination. Okay. Sir. All right. Okay. Now, is the screen also visible? Am I clear with this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Wonderful. Okay. Now, today we are going to start geography. Geography में एक चीज मैं आपको सबसे important बताना भूल गया था, वो है atlas. You need to have, all of you should be having आपके स्टडी डेस्क पे एक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस होना चाहिए. नंबर 1 is यूपीएससी सिलेबस, that should be on your desk. And दूसरा atlas, all times should be on your desk. Whenever you are lazing around, जब आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो atlas should be your best friend. इसमें हमारे पास 2 atlas आती है. One is the Oxford and then is the Orient Black Swan. I would advise you take both of them. You keep both of them with you. Oxford Atlas and Orient Black Swan. स्कूल में भी पढ़ी होगी, 10th में ज्योग्राफी, 10th तक ज्योग्राफी पढ़ी होगी. जिन्होंने आर्ट्स नहीं लिया है, साइंसेस वाले, 10th तक ज्योग्राफी पढ़ी थी. Yes. Yes, sir. ठीक है. तो ये 2 एटलस आपके पास होनी चाहिए. एटलस को कैसे यूज करना है, आप कल सारे अपनी एटलस लेके आइए. कल नहीं, आपको 2 दिन का टाइम देते हैं. 2-3 दिन में एटलस आप लीजिए और फिर एटलस को हमने कैसे साथ साथ में करेंगे ज्योग्राफी में, दैट विल आल्सो आई विल टेल यू. ठीक है. नाउ टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफी? ज्योग्राफी क्या होती है? व्हाट इज ज्योग्राफी?
The study of Earth. Or Study of Earth. Okay. Anyone else? Study of physical Sir, it's environment. a description of Earth. Yeah, that's the that is a more appropriate definition. So geography is derived from two terms. One is geos, and then is the Graph. this means description, and this means Earth. As one of the candidates mentioned, it's basically it is the description of Earth. Okay. Now, what is the relevance of reading geography? Because we are preparing for civil services examination. हम civil services की preparation कर रहे हैं. तो उसमें सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता ही होगा कि relevance of geography. Why is geography important for a civil servant? What is the importance of geography? Can anyone tell me? Sir, to understand the economic activities of the area, diversification. Whenever answering the question, first tell your name and then answer so that I know who is answering. Yeah. Come again. Sir, myself, Saurabh. Saurabh, please. Sir, basically, it is because of economic activities which are affected due to geographical areas. Okay, you talking about economic impact. Yes, sir. Okay. That is one of the aspects. Anybody else can add on to that? Sir, Sarvesh here. Sarvesh, please go ahead. Sir, civil servant needs to know geography because basically he needs to be very careful while implementing certain projects. For example, in the Western Ghats, so they are very ecologically sensitive zones. So you need to think that whether we should implement a certain resort or not, or any of the government project. Very good. This is a very valid point because when you will be heading an administrative department, you are required to understand the implications of your actions, and geographical implications are one of the most important ones. Can anyone add on to that as well? Sir, in geography, the calamity. Sir, I'm Mayuri. Sir, in geography, we also study about the calamities and everything like sir, if any area is flood prone, so that should also be known to a civil servant, like the area of the eastern UP and the Bihar are basically flood prone. So if we need to make any policy, so we need to know that what kind of policy should be suitable for that reason. Okay, so we will club this into one only because this is one and the same thing. Ecologically sensitive areas as well as natural disasters, floods, cyclones like cyclone Fani that happened in Odisha, or we have earthquakes happening. Bhuj ka earthquake aapko yaad hoga. In 2001, disastrous earthquake happened. Floods that happened in Srinagar also. Landslides they keep happening. Apart from that, as you talked about floods. So these can be clubbed under the natural implications or ecologically sensitive. Then we have the economic impact. Apart from that, can you think of anything else? Like we have to work, sir, Vishwajit this side. We have to work for the development. So for that, geographical aspect plays a very major role in the role of development because you have to consider these factors while formulating the policies and all. Absolutely, that's a very valid point. Rural development. What else? Think a lot, think randomly. See, my idea in this class is nobody is going to judge anyone here. We are all learning. I am also learning. I will learn from you. We all will learn from each other. So shed off that inhibition. Feel free to share your ideas. No one is going to judge you here. So be comfortable. जो भी दिमाग में आइडिया आ रहा है, लग रहा है कि फालतू सा आइडिया है, वो भी बोल दो. Because that's how, there is a philosopher called Descartes. He talked about this method of doubt.
where he said that if we discard even the slightest possibility of truth, then we are devoid of, the reality. So that is, we have to implement in this preparation also. आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं उनको बाहर आने दो, then we will filter out which ones are good and which ones are not. ठीक है? So go ahead. Zubin, Arun. Shubhankar this side, sir. Yeah, Shivankar, please go ahead. Sir, I think geography is important when to make the contingency plan when an operator मतलब जब वो किसी दूसरे कंट्री में ऑपरेट करने जाता है तो उसको बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. सो आई थिंक तब ज्योग्राफी मतलब बहुत एक that is a good observation, I would say, but that is more so related to the world of espionage. So yes, working of a spy, which happens to be my former organization. So how that also definitely relevance of geography is there. Anyone else wants to pitch in? For example, during any operations, during the army operations also. So map reading is very important. Cartography, as they say. I think during training exercises also, you will be made to go through, traverse certain terrains, and knowledge of geography comes in handy. Okay. So this is why I ask this question is, we should understand why we are reading a certain subject. So geography, हमें लगता है geography is all about rivers, mountains, plateaus, western ghats, oceans. This is all geography. This is a part of it. See, geography is also a branch of philosophy. It is a branch of philosophy. When we have to understand geography, it brings out a wider implications of the administrative actions that are to be taken. There is physical geography that I just mentioned when we study about landforms, aeolian landforms, that is wind-related landforms. Then we have desert landforms. Then we have the hydromorphic features. All right. Can you tell me how many deserts are there in India? How many deserts do we have in India? There are 2 deserts, hot deserts and cold desert. So like Very Ladakh good. and Leh are the Very, cold very desert good. and Who are answered this? Who the answered this? Mayuri. Very good. So we have 2 deserts in India. The one is the hot desert. Where is it? Rajasthan. Thar desert, right? Yes, sir. Its counterpart is also present in Pakistan. Can you name that one as well? The counterpart of Thar desert. What is it called in Pakistan? THAL, Thal. Thal बोलते हैं वहाँ पे. ठीक है? And then we have a cold desert of Ladakh. Yesterday we talked about an island. Can you remember which one it was? Can you tell me the location of Terra del Fuego? We talked about an island. Terra del Fuego. Did you not revise what I did not go through what I taught yesterday? Sir, in the map it was shown near Argentina. Nee, tell me the answer. Don't tell me what do you know about that island? So yesterday also I talked about there is this island on the southern tip of South America that separates from the mainland by a very small channel. What is the name of that channel? अब किसी ने अपने कल के नोट्स उठा के एक बार देखे भी नहीं? Why is there so much pin drop silence? There was this Magellan Strait. याद आया किसी को? Do you remember the Magellan Strait? Sarvesh, do you remember? Yes, sir. Yes, sir. Now I can recall. Did you not go through what I said yesterday? So see, remember the idea why I try to give you a lot of perspectives here is it will help broaden the horizon of your knowledge also.
बिकॉज प्रीलिम्स में सिर्फ किताबों से पढ़ के आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे. We will have to be very, very open to ideas that come across. I think that was shared in the group also. I made that shared in the group also. The Terra del Fuego वाला. किसी ने जहमत नहीं उठाई उसको पढ़ने की. There was a purpose why it was shared. So please be very particular when certain things are shared. Okay? ठीक है. तो ज्योग्राफी अगर हम वैसे तो इसका एग्जाम से पर्सपेक्टिव से नॉलेज इतना रेलेवेंस नहीं है. When we study geography, there are two ways to study geography. One is the systematic geography, systematization of geography. Then other way we study geography is the regional, when we divide it into scales from global to local. Regionalization of geography. Okay, these are the two things. Apart from that, there are different branches in geography, which we will study gradually when we move to further subjects. We study about geomorphology. You can write that. We study about geomorphology. What do we study here? Landforms and their evolution. Over space and time. This term will be used very often in our discourse. Space and time. So what do you mean by space and time? Space, it means geographical area, and time, it means temporal scale. If this is like 10,000 years ago, can you tell me which important event happened in the history of humankind 10,000 years ago? That was a very defining moment in human history. That was the agricultural revolution. Agricultural revolution happened around 10,000 years ago. That is when on the banks of Nile, on the banks of river Nile, from a small area where some seeds were planted by an African lady. From then on, people, उससे पहले क्या था? We were like nomads. We humans were nomads, hunter gatherers. जब इंसान को ये पता चला कि हम अनाज उगा सकते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ? What would be the logical conclusion to that? Can anyone tell me? पहले तो हम हंटर गैदरर्स थे, हम हंट करके खाते थे, मार के जानवरों को या कहीं पे फ्रूट फल खा लिए. जब हमें ये लगा कि हम अनाज उगा सकते हैं, उससे क्या हुआ होगा? Can anyone? Human settlement. One by one. Please always follow this decorum and discipline. Always mention your name and then answer the question. Yeah. So Arun. Yeah. Please So go they ahead. got settled at one place. Why did they get settled? Can you tell me the reason? Firstly they move from here and there in the need of food, hunting, and when they are getting food at one place. Very good. That's the reason. So जब हमारी वो खाने की तलाश, हमें लगा कि हम खाने की तलाश में ही भागते थे हम यहाँ से वहां, तो जब हमें एक ही जगह पे वो खाना मिलना शुरू हो गया, फिर हमने क्या किया, हमने छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज बनना शुरू हुई. ट्राइबल कम्युनिटीज. मैन स्टार्टेड टू सेटल डाउन इन स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज. हैमलेट्स बनी वहां से विलेजेस बने, then towns, then cities, and finally we have the civilizations. So this is you can quote this example in your essay also. Whenever you're writing essay, you can quote it in your interview, you can quote it in your ethics paper. That see, हमें ना चीजों को थोड़ा सा zoom out करके समझना है. Then only we will be able to give a very good perspective of things. तो ये एक ऐसा revolutionary change था human history में, जिसने मैनकाइंड की ट्रेजेक्टरी को बदल के रख दिया. जस्ट इमेजिन, अगर एग्रीकल्चर का इन्वेंशन ना हुआ होता, अगर हम एग्रीकल्चर को नहीं जान पाते कि खाना उगाया जा सकता है, तो ह्यूमन ट्रेजेक्टरी किसी और डायरेक्शन में जाती. शायद आज भी हम हंटर गैदरर्स होते. द आइडिया इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरियस
landmarks that define the advent of human civilization. सब इसके बाद बताइए next important incident that shaped human history. Can you tell me? What would be the next event that shaped mankind after agricultural revolution? I'm not talking about small Industrial Revolution. Yes, very good. Industrial Revolution. Industrial Revolution. Industrial Revolution कब हुई थी? In 17th century. 1750s to be precise. Which area? Europe. To be precise, which part of Europe? In England. Yes, absolutely. It happened in England in 1750s. So what was the catalyst for this change? Steam engine. Okay. इससे क्या हुआ? लोगों को लगा कि हमारी employment चली जाएगी, industries will take over, but that did not happen. So from 1750s to 1900s, mankind grew exponentially. इसमें कितना ज्यादा रेवोल्यूशन हुआ, और इस पीरियड में सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ जिस एरिया को, कम्युनिटी को, जिस सोसाइटी को, दैट वर द वेस्टर्न वर्ल्ड. वेस्टर्न वर्ल्ड गॉट द एडवांटेज ऑफ दिस अर्ली स्टार्ट. देखिए, किसी भी चेंज को स्टेबलाइज होने के लिए वक्त लगता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. वी कीप टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज. Are you aware of what do you understand? What do I mean when I say climate change? Or do I need to explain? I'll explain it later as well. But you have a rough idea, no? What is climate change? Yes, sir. Jalvayu Parivartan, right? So climate change, what the climate activists they propose, that because of the lot of smoke, use of fossil fuels, coal, oil, natural gas, because of the use of coal, oil, and natural gas, what we did, we increased the carbon dioxide concentration. We increased the global greenhouse gases, GHGs, greenhouse gases, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का डर बढ़ने लगा. ठीक है. अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में 1750s में, तब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वाज 33 ppm, शायद 0.0033 समथिंग, राइट. और उनको वो वक्त मिल गया to boost their economic trajectory and reach where they are today. So the concentration of these greenhouse gases from 1750s to mid 1950s, I would say mid 1950s, that increased. Or till that time, most of the countries in Asia, Africa, and Latin America, they were under subjugation. They were under what? Colonial rule. They were under colonial rule, right? Because of which these territories did not get the benefit. They did not get the benefit of the industrial revolution. Okay. अब उसके बाद next revolution कब आया? 1990s, late 1980s and 1990s. Can you tell me what I'm talking about? क्या बता सकते हैं? Globalization. To be precise, internet, the advent of internet. The advent of internet. All right. That really changed the way we live our lives. Radically changed the exact systems in which the society functions. And now in the mid 2010s and now in the 2020s, what is the next big thing? AI. We talked about IR 4.0, Industrial Revolution 4.0.
And now we have, what is the next thing? We have AI, we have generative AI, we have big data, we have machine learning, all these things. So are you able to understand how from 10,000 years ago to now, from 10,000 years ago to 2024, how has human history transformed? Can you picturize that thing in your mind? Can you picture that thing? So that, ये पूरा आपको समझाने का मेरा मकसद क्या था? That term, वो जो space and time वाला हम term था, मैं उधर से आपको कहाँ ले गया? Space and time. This is, I was talking about temporal scale. This is the temporal scale. Okay? This is the temporal scale. Ki across chronological time scale. And then spatial scales क्या होता है? Across the globe, entire globe, कहाँ पे क्या change हुआ? Like we talked about Asia, we talked about Africa, we talked about Latin America, Western world में, Western Europe and the Americas, they saw, Australia, New Zealand, they saw. This is how, this is all geography. This is all geography. अभी जो Middle East area हम Middle East कहते हैं या West Asia कहते हैं, we talk about this term called West Asia. When we read about international affairs, I think you're going to love that when we reach that part. West Asia, or it is also called as the Middle East. ठीक है, अभी जो churning हो रही है इस एरिया में, can you tell me what is happening in that region? What is happening currently? कल हमने discuss भी किया था. Can anyone briefly tell me what is happening in the West Asian region? सरकारें सब चेंज हो रही हैं. सरकारें किसकी चेंज हो रही हैं? इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है? They are basically fighting on the land, a piece of land. See, I want you to be more precise. Can anyone tell me the exact thing? Anyone has any idea about conflict for admission? Always mention your name. Because then I can see your face as well. Shubham? Shubhankar this side, sir. Shubhankar, yeah, please go ahead, Shubhankar. The conflict between the Israel and Palestine is, the reason is terrorism, sir. Terrorism is not the reason, it is the manifestation. What is the core root cause behind that? Terrorism is the manifestation of the problem that persisted since last 50-60 years. So what is happening between Israel and Palestine? They are fighting for the existence. Existence, but हमें जो भी issues हो रहे हैं, तभी कहता है न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी है. अब 2 महीने आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ डाउट्स आते हैं, मेरे से पूछिए. आई एम हियर टू आंसर योर डाउट्स रिगार्डिंग कि न्यूज़पेपर में ये टर्म नहीं आई समझ, ये टॉपिक समझ नहीं आया, हम उसको डिस्कस करेंगे. तो इजराइल पैलेस्टीन 1948 में इजराइल बना था. कोई बता सकता है मुझे फाउंडर कौन था इजराइल का? डेविड बेन गुरियन. ठीक है, एक बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था. तब से इजराइल जो ज्यूज थे, आपको पता है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में हिटलर ने काफी एट्रोसिटीज की थी ज्यूज, नाजी जर्मनी में ज्यूज पे. डू यू नो दैट? डू यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. Yes or no? Yeah. Yes, sir. तो उसके बाद तब से ही ये जो यूके एंड यूएस का ये प्लान था कि इस एरिया में पैलेस्टाइन में उनको तब से सेटल करने का ये प्लान था. और ये 1948 में ये प्लान बना. 1948 से लेके तब तक इजराइल इन द मिडल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, अरब कंट्रीज के बीच में इजराइल है. तो उसको अपना सर्वाइवल रखने के लिए इट ऑलवेज
दिस कंटेंशन, क्योंकि वो टू स्टेट थ्योरी को डिनाई करता है इसराइल। पैलेस्टाइन कहते हैं कि टू स्टेट पे वो चाहते हैं कि एटलीस्ट गिव अस द जेरूशलम। दिस लॉट ऑफ डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, बट जो मैं बताने की बात कर रहा था कि जो स्पेशल हमारा जो रियल्म होता है, द स्पेशल रियल्म व्हेन वी टॉक, सो ज्योग्राफी इज रेलेवेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशल रियल्म। देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पिवट। पिवट का एक कॉन्सेप्ट होता है, पिवट, और इसको हम कहते हैं हार्टलैंड। If I were to explain it through, drawing a little bit of the map here, it will be easy to understand. So this area, what we call this area? This is called as Eurasia. ठीक है? This region is called as Eurasia. तो ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है कि जो इस एरिया को कंट्रोल करता था, हार्टलैंड कहते थे इसको, कि जो इस एरिया को कंट्रोल करेगा, कॉकेसस माउंटेन्स है यहाँ पे, जो इस एरिया को कंट्रोल करेगा, बिकॉज दिस एरिया इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी, ये बीच वाला एरिया था, ये डिसकनेक्टेड था लैंड मतलब पूरा लैंडलॉक्ड एरिया था। तो जिसके पास इसका कंट्रोल आएगा वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। तो तभी जो लड़ाइयां उस वक्त होती थी वो डन टू कॉन्कर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्कर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पिवट। एक कौन थ्योरी है रिमलैंड की, वो हम पढ़ेंगे ब्रीफली जब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी की। हमने जियोमॉर्फोलॉजी, एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, हमने ये पढ़ ली। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? लैंड फॉर्म्स and their evolution. Then there's another branch that talks about climatology. Can anyone tell me what is climatology? Sir, service here. Mm-hmm. Various types of climate, China type climate, etc. Just tell me roughly, briefly, generally, what do you understand by climatology? Sir, study of climate. Yeah, study of weather, climate, atmosphere. ठीक है, it is the study of atmosphere, its structure, weather and climatic changes. जैसे हमारा कौन सा वेदर क्लाइमेटिक सिस्टम है? इंडिया में कौन सा क्लाइमेटिक सिस्टम है? Anyone can tell me? Very easy question. Anyone? The monsoon tropical type. monsoon type of climate. Yeah, we have a monsoonal type of climate. So that is again, this comes under climatological realm. ठीक है? Next we have oceanography. Oceanography में हम क्या पढ़ते हैं? We study about the topography of various water bodies, their landforms. आपने सबमरीन कैनियंस के बारे में सुना है? सबमरीन कैनियंस? Yes, sir. देन एक टर्म होगा गयोट्स, गयोट्स। ठीक है, देन वी हैव बेज, आइलेट्स। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स के पेपर में ये टर्म दी जाती है। ये टर्म, इट इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स? ये ओशनोग्राफिक लैंडफॉर्म्स है, वाटर रिलेटेड है। फिर एक होती है एओलियन लैंडफॉर्म्स। एओलियन मींस विंड रिलेटेड, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब उस चैप्टर पे जाएंगे हम।
एओलियन लैंडफॉर्म्स, दे आर रिलेटेड टू विंड। ठीक है, और एक और जो इंटेग्रल पार्ट है ज्योग्राफिकल स्टडीज का, वो है द स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कॉल्ड, एनीवन? पेडोजेनेसिस, 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 पेडोजेनेसिस। ठीक है, थोड़ा ओवर तो नहीं हो रहा है? फर्स्ट डे में हम ज्यादा हैवी तो नहीं पढ़ रहे? No, sir. No, समझ आ रहा है No, sir. सबको? मयूरी, Yes, sir. आर यू एबल टू फॉलो? Yes, sir. Yes, sir. अनुभव जी, जुबिन, any doubts please ask. You can stop me, you can just stop me and you can ask if there are any doubts of any sort. Okay, तो पेडोजेनेसिस क्या है? टेल मी। अभी पढ़ा Study हमने of soil. Study of soil. Formation. पेडोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इंडिया में कितनी तरह की सॉइल है? डिफरेंट तरह की सॉइल है इंडिया में। लेटराइटिक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है, वो हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे। और सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ये टर्म्स याद रखनी है, बहुत जरूरी। इडाफिक, edaphic factors. What are edaphic factors? Related to, tell me. Soil. Yeah, soil से related हमने ये terms मेंस के आंसर्स में यूज करनी है। हम पूरा ये लिखने के बजाय, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बजाय हम क्या लिखेंगे? What will pedogenesis? No, formation of soil की जगह हम लिखेंगे pedogenesis. Someone was asking yesterday about answer writing, isn't it? So this is answer writing that is happening. I am giving you a few hints, the terms that you need to pick up, the vocabulary that is required. ठीक है, तो ये समझ आ गया? सॉइल फॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। There are certain factors, that help in the formation of soil. The most important is what? Climate. Climate is very important. अब देखिए, डेजर्ट्स में, डेजर्ट एरिया में जिस तरह का क्लाइमेट होता है, वहां पे सॉइल अलग तरह की होती है। माउंटेन्स में अलग तरह की सॉइल होती है। उसका रीजन क्या है? जहां पे ज्यादा हीट पड़ेगी, सॉइल का ब्रेकेज ज्यादा होगा, वो ज्यादा लूज होगी, ज्यादा लेस फर्टाइल होगी। जहां पे मॉइस्चर अच्छा होगा, प्रॉपर एरेशन होगी, रेनफॉल होगी, वो एक ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी। जैसे हमारा एलुवियल बेल्ट है, जहां पे ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स मिलते हैं, वहां लेटराइटिक सॉइल मिलेगी। तो क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लाइमेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which is related to the formation of soil. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बायोटा। बायोटा एक टर्म यूज करते हैं फॉर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स कैसे सॉइल के बनने में हेल्प करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स, यू नो अर्थवॉर्म्स, दे हेल्प इन द एरेशन ऑफ सॉइल, है ना? अर्थवॉर्म्स। देन वी हैव, सबसे सॉइल बनाने में सबसे ज्यादा, अब आपने खाना बनाना है घर में, आपको गैस तो चाहिए, आपको कुकर भी चाहिए, आपको बाकी सब सामान, लेकिन उसमें डालने के लिए यू नीड राइस ऑल्सो ना। यू नीड राइस, यू नीड दी वेजिटेबल्स। तो वो राइस और वेजिटेबल्स क्या है सॉइल के? Rock. द पेरेंट बेड रॉक। ठीक है, जो रॉक होता है, पेरेंट बेड रॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, द रॉक। तो वो जब ब्रेक होगा, व्हेन इट विल ब्रेक डाउन, इधर से एक फिशर आएगा, एक इधर से फिशर आएगा, इधर से फिशर आएगा, टूटेगा बीच में से, देन इट विल टर्न इनटू सॉइल बनेगी इसकी।
ठीक है ना? सो दिस इज पेरेंट बेडरॉक and gradually turns into soil. ठीक है? So this is what you call about the study of soil geography. इसके बाद geography is also related. So ये हो गया हमारे physical feature से related. हमने क्या देखा? जियोमॉर्फोलॉजी देखा हमने क्लाइमेटोलॉजी देखा, हमने ओशनोग्राफी देखा और हमने सॉइल ज्योग्राफी देखी. इसके अलावा there are social yeah please. Sir, what is the edaphic factors which you mentioned? These are the edaphic factors. Okay, so sir, edaphic factors mean the factors which are responsible for soil formation. Yes, related to soil pedogenesis. Yes. All right. Any doubts, anyone? Sir, can you please tell what is biota again? बायोटा भी बताया ना आपको कि जो अर्थवॉर्म्स हैं या एनिमल्स हैं, हाउ दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. प्लांट्स, लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट्स रूट्स पेनिट्रेट करती हैं तो सॉइल पेरेंट बेडरॉक को ब्रेक भी होता है ना. ठीक है? बायोटा मींस बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, दैट इज नोन एज बायोटा. ऑलराइट, क्लियर अप टिल नाउ? Yes, sir. Someone mentioned about the economic impact of geography. Who mentioned it? किसने मेंशन किया था? So myself, geography, Saurabh. yeah, Saurabh. So geography also has economic impact. For example, हमारे population groups हैं, so इसमें हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉपुलेशन कैसी है, डेमोग्राफी क्या है पॉपुलेशन की, व्हाट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल. डू यू अंडरस्टैंड द टर्म डेमोग्राफी? डू यू अंडरस्टैंड डेमोग्राफी? इट इज द पॉपुलेशन प्रोफाइल. अभी डरिए मत, टर्म्स को बस समझते जाइए. जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ 10, 15, 20 डेज ये हमारा क्लियर होता जाएगा. इट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन. डेमोग्राफी में क्या है? एज, सेक्स स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द gender profiling of the population, number of males, number of females, how many people are old, how many young. So वो population profiling that comes in demography. ठीक है? जब हमें डेमोग्राफी पता होगी, ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पता होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फ्रेम बेटर पॉलिसीज, isn't it? अरुण, समझ आ रहा है? Yes, sir. What is demography? So it is basically डिफाइन करती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने अमाउंट के पर्सन हैं और उनकी क्या एज है, क्या उनका सेक्स है, क्या उनकी एज है, क्राइटेरिया. क्या फायदा मिलेगा? हाउ विल इट बेनिफिट अस? इसलिए हमें पॉलिसी सर मेकिंग में मिलेगा, फायदा मिलेगा कि जैसे कोई पॉलिसी बनानी होगी हमें स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हमें पता होगा कि इससे इस एज के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो हम पर्टिकुलरली उस एज ग्रुप के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो वो एफिशिएंटली वर्किंग पॉलिसी बना सकते हैं हम. ठीक है. तो बेसिकली ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी हम इसको कहते हैं. ठीक है? ये कहीं पूछने नहीं वाला है एग्जाम में, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? क्लियर है यहां तक? यस सर. Yes, ठीक sir. है. अब टर्म ज्योग्राफी किसने कॉइन किया था? पूछना तो किसी ने है नहीं, बट फिर भी Eratosthenes, something like that. Eratosthenes. Who coined the term ज्योग्राफी? Eratosthenes. बस ये लिख लीजिए, ये पूछना नहीं है किसी ने, बट ये तो स्टेट पीसीएस से छोटे एग्जाम्स में भी नहीं आएगा, बट फिर भी जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी. ठीक है? तो एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? अभी तक किसी को कोई डाउट कि ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ने का रेलेवेंस क्या है?
Yes, guys. No, sir. No, sir. फिर सवाल पूछूं अगर डाउट नहीं है तो. Yes, sir. Yes, sir. बड़ा ठंडा yes sir है यार. Yes, sir. जोश हाई होना चाहिए. 1750 में क्या हुआ था? Sir, Industrial Revolution. Industrial Revolution. कहाँ पे? England. England. इंग्लैंड में हुआ था. इंग्लैंड में हुआ था. इंग्लैंड में. Yes, sir. इंग्लैंड में नहीं हुआ था. Yes, sir. England में ही श्योर हुआ. इंग्लैंड में ही हुआ था. England में ही हुआ था, sir. Yes, sir. ओके, फिर ठीक है. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कब हुआ था? Sir, 10,000 years ago. कहाँ पे हुआ था? स्टार्ट वेयर डिड इट ओरिजिनेट? Near Nile River. Near Nile River. कहाँ पे? नाइल रिवर कहाँ पे? ये तो मैंने बताया नहीं आपको. आप मुझे बता Egypt. दो. Africa. African continent. इजिप्ट. इजिप्ट, वेरी गुड. इट हैपेंड इन इजिप्ट. ठीक है. तो जब यूनिवर्स बना, तो यूनिवर्स बना कितने साल पहले? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. 13 पॉइंट. तब एक इवेंट हुआ था, उसका नाम पता है किसी को? क्या हुआ था तब? Big Bang. Very Big good. Bang. Big बिग Bang. बैंग. तो आपको एक चीज दिखाते हैं अभी. बिग बैंग थ्योरी. फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, हाउ स्टार्स वर फॉर्म्ड. Just listen to this small, watch this small video. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Listen to it. All you need to make a star is hydrogen, gravity, and time. Gravity pulls the dust and gas into a giant, swirling vortex. Gravity brings matter together. And when you bring matter together and you squeeze things into smaller spaces, they necessarily heat up. It's a simple law of chemistry. You compress something, you drive the temperature up. Over hundreds of thousands of years, the cloud gets thicker and forms a giant, spinning disk bigger than our entire solar system. At its center, gravity crushes the gas into a super dense, super hot ball. Pressure builds until huge jets of gas burst out from the center. That really shows you how violent a process star formation is. These jets are many light years across. Something is literally accelerating material very fast across unimaginable distances. Gravity keeps the pressure on, sucking in gas and dust particles that smash into each other, generating more and more heat. Over the next 500,000 years, the young star gets smaller, brighter, and hotter. Temperatures at its core reach 15 million degrees. Only at that mind-boggling temperature can atoms of gas begin to fuse together, releasing massive amounts of energy. And just like that, a star is born. We are about to reach our destination. We have covered. So, did you watch the video very closely? Yes, sir. How was it? It was good, sir. Okay. So, can I ask a question? How Yes. please Yes, sir. watch the video? So, what is the temperature at the core of the star? What is the temperature? सिर्फ वीडियो देखा है, ध्यान से सुना भी है? Anyone? जिसने ध्यान से सुना? 15 billion.
15 million degrees Celsius, sir. Yes, yes. तो ये सिर्फ आपको मनोरंजन के लिए नहीं दिखाई थी. This is how, you know, stars are formed. Star के core में क्या होता है? What is at the core of a star? Can you tell me? What is at the core of a star? Hmm? Anyone? So we have at the core of the star, there are these lumps of gases. Okay. क्या होता है कोर में? Lumps of gases, sir. And this entire huge जो पूरा जो gases का बॉल है उसको हम बोलते हैं नेबुला. मुझे लगता है अभी तक वीडियो के इम्पैक्ट में ही हो आप लोग, वापस नहीं आए हो. आ जाओ क्लास में वापस. ठीक है. तो this happens, this is like a rotating disk. This turns into a rotating disk. It rotates. और इसके जो सेंटर में ना very high gravitational force develops. Very high, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा. ध्यान से सुना आपने, वीडियो को समझने के लिए था. I don't get proper responses. I want more active participation from you. ठीक है? Yes, sir. तो इसका core is a gas. In the core of the star is a gas. और इधर क्या है साइड पे? Dust particles. There is dust. So in the center we have gas in the center, and periphery we have dust. And this is very high gravitational force. Very high gravitational force is there. जिसकी वजह से ये gradually it converges into a very very small ball. बहुत छोटी एक बॉल बन जाती है, जैसे हमने वहां पे देखा अभी. तो ये एक कन्वर्ट होता है, इतनी बड़ी गैलेक्सी से एक छोटा सा एक स्टार बन जाता है. दिस इज ब्रीफली आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड. कुछ क्लैरिटी हो रही है इस चीज की? Yes, sir. Yes, sir. एक बैलून है, एक बैलून ले लो. एग्जाम्पल काफी कोड. एक बैलून के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स डाल दीजिए अगर, और बैलून को इन्फ्लेट करो. तो जैसे जैसे बैलून बड़ा होता है, वो जो डॉट्स हैं आपस से दूर होते जाते हैं. Yes, दूर होते sir. जाते हैं. तो ये एक हाइपोथेसिस होता है कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का हाइपोथेसिस है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. ठीक है. बिग बैंग हुआ, फिर गैलेक्सीज बनी, हमारा सोलर सिस्टम बना. कैसे बना वो सारा प्रोसेस, दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. मुझे लग रहा है आपके लिए फर्स्ट डे के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है ये. No, sir. समझ आ रही है? Yes. अच्छा, कितने प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में? हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8. हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8. 8, sir. एक हमारे एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, and then there is the inner belt, then there is an outer belt. अच्छा, there is a belt of asteroids also. Asteroid belt is also there. Yes. वो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में है? Belt Mars of and Between Jupiter. Mars and Jupiter. सबको पता है, सबको पता है. वेरी गुड. मार्स एंड जुपिटर. अच्छा, आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पता है? हमारा कॉन्टिनेंट, हमारा जो पूरा जो ग्लोब है, हमारा जो प्लैनेट है, वो छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है. डू यू नो दिस? Yes, sir. They're continental plates. So there is this theory. आज मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ. डिटेल में मैं आपको कल से ही पढ़ाऊंगा. थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है. व्हाट इट एक्सप्लेन्स बोथ दीज थ्योरीज. पहले ये वाली थ्योरी आई, फिर लेटेस्ट थ्योरी इसको रेफ्यूट करने के लिए फिर बाद में आई थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. सो व्हाट दिस थ्योरी डिड, it explained
the current position of continents, ठीक है। करंट पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स क्या है? पहले एक बहुत बड़ा एक पैंजिया होता था, देयर वाज दिस पैंजिया 200 million years ago. What happened? $200 million ये ब्रेकअप होना शुरू हुआ। इसके दो पार्ट्स बन गए, एक गोंडवाना लैंड और एक लोरेशिया। और इन दोनों को डिवाइड, इसके आसपास का जो एरिया था दैट वाज कॉल्ड एज पैंथलासा। पेंजिया के आसपास का जो एरिया था दैट वाज नोन एज पैंथलासा। और इन दोनों के बीच में एक टेथिस सी भी आ गई। someone talked about this yesterday when I asked about Himalayas के सुनने में आपके दिमाग में क्या आता है? Someone talked about Tethys Sea. तो Tethys Sea यहाँ से रेफरेंस आता है Tethys Sea का, क्योंकि जहाँ पे हिमालयाज हैं it is presumed that वहाँ पे there was this huge sea and because of the coming together of the continental plates, convergence हुई उनकी। जैसे for example there is this two plates, okay, two continental plates. When they converge, they push towards each other. This is also a continental plate. This is also a continental plate. When they push towards each other, because they move due to the convection currents, mantle है ना, जो अंदर mantle होता है, अर्थ के अंदर एक mantle होता है, वो डिटेल में बताऊंगा। उसके अंदर convection currents होते हैं, उसकी वजह से ये plates एक दूसरे की तरफ move करती हैं, जिसकी वजह से इससे क्या होगा? Next step, one plate will be thrusted and another plate will overtake. तो यहाँ से फिर mountains at the point of convergence, at this point, mountains are formed. तो हिमालयाज आपका कौन सी दो प्लेट्स के कन्वर्जन से बना था? Can anyone tell me? Eurasia and in Indo-Australia. Indo-Austral plate, yes. तो हिमालयाज were formed by the convergence of which plate? Number one, Indo-Austral plate and Eurasian plate. ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये कहती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसको बाद में आके उसने रिफ्यूट किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी स्टडी करें, देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन द अर्थ। वी हैव लिथोस्फेयर, उसके नीचे आपका स्टेनोस्फेयर आता है, फिर मैंटल आता है, इनर मैंटल, आउटर मैंटल, इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा ओवरवेल्म हो रहे हो इतनी इंफॉर्मेशन से। No, sir. Can I get a heads up from all of you? Yes, sir. चलिए फिर Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर लिखिए। Write a short answer. You will have 5 minutes to write this answer. Keep your pen and paper ready. Only 5 minutes. Keep your cameras on so that I can see nobody is cheating. All set? ये हमने जो आज डिस्कस किया उसी में से दे रहा हूँ।
Greenhouse gases, you know, carbon dioxide, methane, all these gases. These are called as greenhouse gases. And let me break it up for you. So always when you have to answer, सबसे पहले आपने keyword understand करना है, पूछा क्या गया है. So you have to analyze, right? Sometimes it is written elucidate, sometimes delineate. तो वो ध्यान से पढ़ना है. अब impact किस चीज का? Increase in greenhouse gases. कब से हुई है ये आपको मैंने सारा बता दिया है. किस चीज पे? Global climate change. So you have 5 minutes. The time starts now. Ms. Neha, I've already mentioned it. Tomorrow's class, polity class will be from 6:30 to 7:30. As Major Abhinandan has an appointment with a doctor early morning. So please be present accordingly, half hour prior. You have last 2 minutes. Please conclude your answer.
Done, sir. Done. Everyone finished? Everyone finished? Yes, sir. Okay. Okay. Who goes first? Just tell me the points and how you have started and framed your answer. I will always, one thing that I want you to make sure in this program is we have to be the first one to take the initiative. That is the most important thing. मुझे बोलना चाहिए कि नहीं पहले उसको बोल दो. आप सब इतना एनर्जी चाहिए यहाँ पे. Because I'll tell you one incident. There was this in my first job when I joined the corporate. There was this selection was to be made for the head CR, that's HR. So it was only by the raising of hands. A split second I got first. And the other one wanted to be, he couldn't because I was that like marginally fraction of a second quicker. So I would want you to do the same. Okay. So who goes first? So may I, Mayuri? Yeah, good. Please go ahead. Sir, I started with giving the introduction like greenhouse gases consist of methane, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, water vapor, etc. The amount of greenhouse gases started increasing in the atmosphere since industrial revolution. Wait. Just read the introduction, what you've written in the introduction. Sir, I wrote like greenhouse gases consist of methane, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, water vapor, etc. The amount of GHG started increasing in the atmosphere since industrial revolution of 1750s. So this I wrote in the introduction. Just tell me what are the points that you mentioned. What are the Sir, points? Yes, sir. So it asks about analyze the impact. So, sir, in the following are the impacts. So, sir, recent floods in Pakistan and Philippines are due to climate change. And, sir, the earth temperature is rising. So, high level of heat waves can be seen in Japan as well as northern India. So, sir, heat waves. And, sir, wheat crop production has also decreased due to climate change, impacting the food security. So, sir, food security is the third point. And, so the sinking of the small islands. Sir, I mentioned many small islands and capital like Jakarta are also sinking. And sir, Papua New Guinea also due to climate change. So we need to, sir, conclusion when I made, so we need to decrease the greenhouse gases in the atmosphere by investing more in renewable energy and green technology like green hydrogen, etc. So very good. That's please give it up for her. She has written such a beautiful answer. It's a very, very good answer. Thank you, sir. See, this is what the structure of the answer should be. Although we need a few refinements. Introduction आपका थोड़ा सा better हो सकता था. Introduction में you could have given a small context, but the points that you have brought out, they are actually very good. I would want you to share your answer in the group. Share it with let it share. Who goes next? Sir, Kajal this side. Can I read it? Yeah, sure. So I started with the increase in the level of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and oxides of nitrogen and sulfur have impacted the life of mankind and the entire globe on a whole. So the impact can be seen by comparing the environmental and climatic conditions pre-industrial and post-industrial revolution phases, and it has impacted the global climate in following ways. First one, it has increased the global temperature conditions. Second one, the change in the pattern of precipitation, such as increase and decrease in the level of rainfalls, which was not expected earlier. Change in weather phenomena, such as certain droughts, certain floods, and it has led to many disasters like landslides, tsunamis, submergence of many glaciers. Then it has also led to certain economic impacts, such as decrease in the agricultural production, change in cropping pattern. Then it has also affected the biota, like aquatic organisms. They have also died. Fishes, due to anoxia, fishes have died and have seen many kind of infections in their gills. Soil microorganisms have also declined.
Biodiversity has also faced loss due to this. Moreover, if we see humans, it has led to many health implications also, like asthma, bronchitis, and many more. How So did I you have conclude? concluded I have concluded that steps must be taken starting from the local to international levels. And I also mentioned about the Paris Accord, which has aimed to decrease the level of greenhouse gases to below the pre-industrial level, revolution Very level. good. Very good. Your answer is even better. I think you have framed the introduction also very nicely and have given very good examples. So this is also a very, very good answer. This is what I was expecting, and only on the second day itself, you have written such a wonderful answer. This is very appreciable. Well done. Well done. You also share your answer in the group. Okay. Who goes next? See, Mayuri and Kajal have already set the bar high. So let's see. Just mention what are the points you have taken, because I'll take it. otherwise it will take a long time. Just try to mention the points and how you have introduced. Yeah. Go ahead. Go ahead. Yes, sir. Sir, I have first introduced you to what is greenhouse gases in the introduction in 4 lines. Then I have written that due to increase in climate change, it results into melting of glaciers, and due to which there is sudden rain, which causes the crop damage. Third is it affects the coral reefs due to heating, which results into zooxanthellae. That's an extra point that nobody mentioned. Very good. Then it raises the due to as the temperature raises, it results in flooding. Next is rivers and lakes dry up due to extreme heat, and various reports have mentioned that due to rise in heat, it affects the productivity of the laborers. Yes, sir. This all. Good. Good points. Good points. Very good. All of you must I would say all of you should share your answers in the group, because it will help each of you learn from others' experience. There are no judging each other. It's just about learning from each one, right? Very good. Very good. Who's next? Arun? Have you written something? This is my first time and I had mixed No all worries. this. Nobody's judging anyone here. We all learn, we all grow. Feel comfortable in sharing the points that you've mentioned. I had not written the points. I had just written a story. That's it. Okay. Okay. What is the crux of your story? That the rising in temperature, sea level increases, and mainly due to that, most of the nations are drowning in the sea. Like coasts are affected by the temperature, because sea temperature also increases with the global temperature, melting of glacier. Idea is good. See, the idea is good. We need to structure it well. We can learn from how our other friends have written. That's about it. Who else wants to pitch in? We'll take another 2 of you, because whoever is willing, 2 more answers we will discuss. Yeah. Shubhankar this side, sir. Yeah, Shubhankar, go ahead. Sir, my answer is not also well structured, sir. Maybe thoda wo story type. No worries. Just mention the points. If you have any extra point which has not been mentioned as of now, अभी तक जो हमने points हम discuss कर लिए, उसके अलावा कुछ extra point आप जैसे coral reefs उन्होंने बताया, lake और river ecology के बारे में बताया, labor productivity के बारे में बताया. The idea is, because जब too many brains work together, we get extra points to add. So this is kind of an exercise that helps each other. तो कुछ extra point आपके दिमाग में आया? सर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं आया, जस्ट रेंडमली ये लेट 17 में ये स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब बढ़ गया था, देन ये थोड़ा स्टार्ट हो गया था सर. कोई बात नहीं. You learn from what others have written. Okay, no worries. Who else? Sir, Aditi this side. Yeah, Aditi, please go ahead. So first I started with the introduction,
When I wrote that the greenhouse gases refers to the harmful gases that affects the climate and leads to the deterioration of the quality of air and also affects the environment. The greenhouse gases involve CO2, methane, nitrous oxide, CFCs, and many other. And when I mentioned about the points, I mentioned the rise in temperature, which leads to flooding and many other disasters. I mentioned about the melting of glaciers, the impact on biodiversity, and also the rise in CFCs, which have affected the ozone layer, and it is in itself affecting the life of the What are the mankind. solutions? Any solutions you have suggested? So we should avoid using, like, CFCs are basically found in air conditioners and also in refrigerators. So we should avoid or minimize the use. We can't avoid it for sure, but we can minimize their use so that it could lead to less damage. Okay, good answer. Good answer. Share your answer as well. I am having one more point that nowadays Sahara is getting greener day by day, and that What is is getting? What is Sahara getting? Desert. Okay. There is this That idea of green wall that is being constructed. If we talk about Africa, that's a good point that you've mentioned. If we talk about the African continent, तो इसमें क्या कर रहे हैं वहां पे? All across this Sahara Desert, they are building this green wall. Plantation, massive plantation is being done. So this is a good example. This is a good thing. So greening of the African continent to counter the adverse impacts of global warming. Okay. Anyone else who wants to pitch in with something? All sorted? Everyone? Okay. So, did you find any benefit from this exercise? कुछ फायदा मिला इससे? कुछ सोचने में मजबूर हुए? कुछ आइडियाज आए? हमने जो डिस्कस किया, कुछ बच्चों ने कुछ पॉइंट्स दिए, दूसरों ने एक्स्ट्रा पॉइंट दिए, तो हमें एक होलिस्टिक एक आंसर मिल गया. अभी आई जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया कि हमें आंसर स्ट्रक्चर कैसे करना है. Whenever, for example, like this is an A4 sheet, ठीक है? A4 शीट है और ये दूसरी A4 शीट है. 2 पेजेस में अगर आपको 10 मार्कर लिखना है तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे. Am I audible to you? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. इंट्रोडक्शन आप देंगे. इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है? We try to give the context. Try to give the context of the question. कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया. अब ये हमारा क्या टॉपिक, हमारा क्या सवाल था कि इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस. तो हम इसको कैसे शुरुआत कर सकते थे? If I would have done, how would I have done that? So you can start with, I'm just giving you rough, you cannot not necessarily do like this. According to IPCC AR6, 40 archipelagic glaciers have melted in the last half century. ठीक है, ये हमने डेटा कोड कर दिया और ये बात कर दी. This underscores the importance of taking this threat of climate change seriously. इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफ करके समझ गया आप आइडिया मैं क्या देना चाह रहा हूं यहाँ पे? You got it? You use a report. Start your introduction with some report, with some data that will tell the examiner that you are an aware citizen as well, aware candidate. तो इससे आपको एक 0.5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे.
अगर आप ऐसे शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको आपने मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस में इसको खत्म करना है इंट्रोडक्शन को, ठीक है। गॉट इट? give me a yes or no also so that I know that you are following it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. ठीक है, तो yes बोलना है ताकि मुझे Sir, there पता is चलता one रहे। हाँ बताओ। I had just checked that Venezuela has lost all his glaciers this Okay, okay, last okay. month. That also you can mention points like this. आप ये Yes. चीजें को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलरली आईपीसीसी की रिपोर्ट में इसलिए कोट करने के लिए कहता हूँ बिकॉज दिस इज एन अथॉरिटी. IPCC is an authority on matters related to climate change. What is IPCC? Can anyone tell me the full form? IPCC is Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. Okay. It was founded in 1988. Collaboration of UNEP plus WMO. ये चेक करना कि इन दोनों की collaboration से ही बना था एक बार कोई, if you can check on the internet. As far as I can remember, this was it. ठीक है, तो ये आईपीसीसी की रिपोर्ट ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल व्हेन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज मेंशन अ क्रेडिबल सोर्स. जब आप इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ आंसर लिख रहे हो तब आप आईएमएफ को कोट करो, वर्ल्ड बैंक को कोट करो. यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंप्रेस हियर. आपको डे वन से ही हम आंसर राइटिंग पे भी ट्रेन कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप. अब बॉडी में आपने क्या मेंशन करना है, आपने ये आपका लंबा आ गया, इतना नहीं आना चाहिए. ये इंट्रोडक्शन आपका इधर खत्म हो जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1/3 ऑफ द पेज में आपका इंट्रोडक्शन आना चाहिए. फिर इधर आपका ये पूरा बॉडी होना चाहिए आंसर का, ठीक है. और समझ लीजिए नेक्स्ट पेज यहां तक यू शुड राइट योर पॉइंट्स एंड देन यू कंक्लूड, देन यू राइट द कंक्लूजन. कंक्लूजन में सजेशंस आने चाहिए आपके, ठीक है. फ्यूचरिस्टिक जैसे किसी ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की थी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. देन यू है हमारा UNFCCC जो है. देन वी हैव दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस. India is doing pioneering in that. Then we are also talking about net zero. Then we are also talking about Panch Amrit. ठीक है, all these things makes your answer look much better. ठीक है. और जो बॉडी में आपने क्या करना है, बॉडी में पहले तो आपने इम्पैक्ट, क्वेश्चन क्या था, इम्पैक्ट. तो बॉडी में सबसे पहले आपने इम्पैक्ट्स बताने जो आपने बताए हैं, अच्छे से बताए हैं, उसमें आप 4-5 पॉइंट्स दीजिए, ठीक है. फिर इधर सॉल्यूशंस बता दीजिए, सॉल्यूशन बता 2-3 सॉल्यूशंस दे दीजिए और कंक्लूड कर दीजिए. This is going to be how you will write a very good answer. Anyone has any doubts in this? No, sir. समझ आ गई आंसर एक कैसे फ्रेम करना है. yes, sir. इंट्रोडक्शन में Yes, sir. इंट्रोडक्शन में आपका होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का. कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों सवाल पूछा क्यों गया है, इसकी बैक स्टोरी क्या है. ज्यादा पीछे नहीं जाना, हमने रेलिवेंट डेटा या कोई रिपोर्ट या कोई केस स्टडी है तो हमारे पास वो देनी है, ठीक है. फिर हमने क्वेश्चन को ब्रेकअप करना है. क्वेश्चन को ब्रेकअप कैसे करोगे, जैसे क्वेश्चन क्या है, एनालाइज क्या करना है हमने, इम्पैक्ट. So we have to analyze the impact. Then किस चीज का, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस का. तो हमारा आंसर का मेन बॉडी में ये होना चाहिए कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है. फिर सॉल्यूशंस भी आने चाहिए. सॉल्यूशंस पूछे हैं नहीं पूछे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपने सॉल्यूशंस हमेशा देने हैं. ऑलवेज गिव सॉल्यूशंस एंड ऑलवेज एंड विद अ पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक आइडिया. Whenever you end your answer, you should end with a futuristic idea. Conclusion should be futuristic, never pessimistic. Never be pessimistic in your answer. Never be pessimistic. Okay. और सबसे थंब रूल क्या है, not even in your dreams never criticize the government.
नीदर इन इंटरव्यू, नीदर इन मेंस। प्रीलिम्स में तो पूछेंगे नहीं आपसे वो, उसमें तो यस और नो होता है। कभी भी कोई पॉलिसी का क्रिटिसिज्म करना होता है तो आपका जो वैलिड पॉइंट्स हैं वो बताइए, फिर उसके गुड पॉइंट्स भी बताइए, दोनों चीजें बताइए, ठीक है। एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला क्रिटिसिज्म नहीं देना कभी गवर्नमेंट पॉलिसी का, क्योंकि कोई भी पॉलिसी लाई जाती है, जल जीवन मिशन हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन हो, कोई भी मिशन है गवर्नमेंट का, उसके पीछे जो हमें क्या करना है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसका गोल क्या, माइंडसेट क्या है उसके पीछे। पॉजिटिव चेंज ला, ट्रांसफॉर्मेशन, हर घर जल से नल, 24 करोड़ हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शंस, ये टारगेट था जल जीवन मिशन का, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव एक उसका विजन है, तो हमें उस पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। फिर हम ये बताएंगे, डिस्पाइट द हाई विजन, डिस्पाइट द हाई ऑब्जेक्टिव्स एंड अ नोबल एम इन माइंड, वी आर स्टिल हैविंग अ फ्यू चैलेंजेस, फ्यू बॉटलनेक्स। फिर उनको करेक्ट करने के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। दैट्स इट। क्लियर? Yes, sir. Sir, I was Clear है? having one doubt. Yeah, please go ahead. Sir, like we did the intro and then we have told the impact of increase in greenhouse gases. And sir, then you told that we should write some solutions like green hydrogen mission and ISA and net zero Panchamrit. Sir, like how we need to conclude then? Like if we have given the solution, then conclusion. देखिए उसमें भी आपने सॉल्यूशंस बताने हैं, कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड क्या होगा। कंक्लूजन इज मोस्टली वे फॉरवर्ड, इट्स वे फॉरवर्ड। फ्यूचर में हमारा क्या गोल है, इसमें आप कोई एनेक्डोट यूज कर सकते हो, है ना, कोई एनेक्डोट आप यूज कर सकते हो, तो दैट इज ऑल यू विल डू। ये चीजें आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। सोल्यूशन शुड बी 2 to 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आई वुड से, एंड उनमें से कुछ चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर दो, क्योंकि आपको कंक्लूजन में पॉजिटिव आउटलुक दिखानी है कि हम फ्यूचर में, आप उसमें ये बता सकते हो कि गोइंग फॉरवर्ड, सिंस we should graduate toward, we're graduating towards hybrid technologies, we're graduating towards EVs. Also, how we can use the artificial intelligence, big data, machine learning to improvise and fine tune our systems and build an integrated smart cities, smart societies, so that the idea of this global warming is taken care of. एक argument build करनी है, एक positive argument around that point, है ना? Okay, sir. Got it? Yeah. Anyone else having any doubts? किसी को और कोई डाउट है? No, sir. Sir, So I think we'll how can we start the sir मतलब how can we start practicing the answer writing? अभी आंसर राइटिंग नहीं करना है, अभी आप पढ़ो। अभी कुछ पता नहीं है तो आंसर कैसे लिखोगे? अभी पढ़ो। मैं ये आपको क्लास में जितना करा रहा हूँ अभी उतना करो बस, अभी इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। Why I am initiating you in the class, I am making you aware. तो हफ्ते में कभी 3-4 दिन में एक मैं सेशन ले लिया करूंगा, एक क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे, ताकि अब इस आंसर को आप इतना कर सकते हो जो हमने आज डिस्कस किया है, और जो आपके बाकी फ्रेंड्स आंसर शेयर करेंगे ग्रुप में, आप उनसे सीखिए कि आप कैसे एक बेटर आंसर लिख सकते हैं। आप इसी आंसर को बाद में आराम से बैठ के लिखिए और खुद चेक कीजिए, ठीक है? उसको चेक कीजिए कि आप कितना लिख रहे हो, आप खुद से आप इंप्रूव करेंगे उसमें, और इन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़िए, नेट पे जाके आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में पढ़िए, ठीक है? क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, कुछ नया गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई है, उससे आपका नॉलेज बढ़े। आप एक टॉपिक ही करिए, व्हाई नॉट डू दैट, है ना? गॉट इट? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir, got it. Okay. So I think we'll wrap up today's class here. And was today's discussion worth some value? I think we'll Yes, sir. keep our cameras on for a while before we conclude, so that yeah. So what was your experience of today's class? What was the learnings? Anyone wants to summarize what we learned today in under 1 minute? Can anyone summarize in under 1 minute what we studied today? Your interview preparation is also being done there. Critical powers of assimilation. Clear
exposition. Are you able to depict that? Without looking at your notebooks, just try to recall for 10 seconds, 15 seconds and try to think जो भी दिमाग में आ रहा है हमने आज क्या पढ़ा. Anyone? Just one. We'll take just one candidate, whoever volunteers. Sir, I would like to try. Yeah, please go ahead, Sarvesh. Sir, in today's lecture, we learned what is the purpose of studying the geography. So in that we learned what is geography, who coined the term, and in why it is necessary to learn geography, and why it has its importance, etc. I think, sir, your screen is freezed. Sir, your screen. I think screen is freezed. Navjot sir. Damn, I'm become the host. Am I audible to you? I think I was not able to see any Yes, of you. Something. Sir, your Your screen got freezed. Okay, I think it got frozen now. Anyways, so who was speaking? Sarvesh के बाद anyone wants to continue with the concluding argument? उसके बाद क्या पढ़ा हमने आज? जल्दी से, quickly, इतना time नहीं है. Quickly. So firstly, we had studied about the geography, वो what बता दिया. वो term it, बता and दिया. then after Geography बता दिया उसके बाद. about the cosmos, that how stars get created. Mm-hmm. We had studied about, I think, climatology and other Okay. technology and Next. other. Okay. Let someone else join in. I want a participation from everyone. Anjali, I think we'd like to hear from you as well. Those who have not taken part as of now, we want your participation also. Anjali, can you hear us? I think we cannot hear. I think Sunidhi can go ahead. Excuse me, sir. Yeah, please. One candidate wants to join in right now. Now the class is almost over. Class They're is just over. I think asking me. no, there's no point now. Who is Oh, take the information, because now we are concluding only. There's no point. Okay. Okay, and one more thing, sir. Please discuss about tomorrow's class. If it's okay that sir takes an off, or they can manage 1 hour's class. Just confirm it with them. What about, because tomorrow actually I had to discuss. Abhinandan has appointment with the doctor early in the morning. So if you guys can manage us early 6:30, if you guys can attend, so you will have a short 1 hour class. Or if all of you are not comfortable, we will have to skip tomorrow's class. So which one is convenient to you? Because will you be okay attending an hour's class, or should we? What is? Sir, I'm okay with it. So. Everyone, we want to take a go ahead from everyone. 6:30 is okay. 6:30 is okay for everyone. Yes, sir. Okay. So we'll have a short 6:30 to 7:30 short class. Okay, be there. So today, let's wrap it up now. So today we studied about the advent of geography, the relevance of geography, and how we need to study the different facets of it, how societies have evolved and what is the impact on the historical timescale of the knowledge of geography on spatio-temporal timeline. We also studied about the various types of geography के different branches के बारे में हमने पढ़ा.
फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में ब्रीफ आइडिया लिया, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमने हल्का सा समझा, हिमालयाज कैसे बने, सॉइल टाइप्स क्या होती हैं उसके बारे में हमने हल्का सा समझा. And then we also wrote this beautiful answer, and I think this was the most, I think, effective part of the class where you got to churn your brains out, है ना? Yes, sir. So I think we'll keep doing these exercises so that we are able to bring more effectiveness in the days coming forward. So that we should conclude the class here. Anything any of you guys finding any difficulty in understanding or in the pace of class can let us know so that we can tweak accordingly. किसी को कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, पेस में क्विक है, या कॉन्सेप्ट अभी बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट में हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अभी समझ आ रहा है सब कुछ, इजीली अंडरस्टैंडेबल एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, वंडरफुल. Yes, sir. वंडरफुल. So we'll wind it up here. Tomorrow be there at 6:30 for polity. I'll see you in the evening. ठीक है? और अखबार पढ़ के नहीं आओगे तो क्लास में मैं नहीं अलो करूंगा. अभिनंदन सर का तो पता नहीं, मैं अलो नहीं करूंगा कल क्लास अखबार पढ़ के नहीं आओगे तो. Mark my words. I'm not going to take the class. First question will be this. I will randomly ask you, पहले तो कौन सा अखबार पढ़ा है और उसमें से सवाल पूछूंगा मैं. तो ये रगड़ा शुरू हो गया. अभी एक दिन हो गया, आपका कल बता दिया था, हनीमून पीरियड खत्म. अभी क्लासेस प्रॉपर फुल ऑन. आपको एक्सक्यूज नहीं है इसमें. देयर इज नो एक्सक्यूज. देयर इज दिस आइडिया ऑफ टेकिंग नो डे ऑफ. वी डोंट हैव टू टेक एनी डे ऑफ. आई हैव गिवन यू संडे इवनिंग, आपको ऑफ दी हुई है, उसके अलावा कुछ ऑफ नहीं है. ठीक है? सो बी कंसिस्टेंट. जो आज हमने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लीजिए. अभी तो वैसे कॉन्सेप्चुअल इतना पढ़ा नहीं आज, बट जो भी पढ़ा है इसमें से सवाल पूछूंगा मैं और आने चाहिए. आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो साथ साथ में, और बुक्स ले ली सबने ज्योग्राफी की? जी सर, वही बोला था मैं. सर फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करना है. फिजिकल ज्योग्राफी, वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल ज्योग्राफी. या वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल ज्योग्राफी. एनसीईआरटीज आप ले आइए, जीसी लॉन्ग भी रख लीजिए. एटलस, एटलस भी बोला. एटलस गेट बोथ ओरिएंट ब्लैक स्वन एंड ऑक्सफोर्ड के एटलस. और सिलेबस आपके पास होना चाहिए. अगर किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है, वैसे यूपीएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे. उसमें ऑप्शनल्स को हटा के, जिसमें ऑप्शनल वाला पार्ट है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग है, आपको उसके ऊपर वाला पार्ट आप प्रिंट करा लीजिए और अपने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए आगे दीवार पे, ताकि आपकी आंखों के सामने वो रहे हमेशा. एक कॉपी अपने पास रखिए और एक दीवार पे लगाइए, ताकि आप उसको पढ़ते रहिए सिलेबस को. जैसे आप GS 1 2 3 4 मेंस का है, जो आप देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसमें, उससे आपको ये पता चलेगा कि जब अखबार पढ़नी है तो उसमें मुझे क्या पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या पढ़ना है मुझे. मैंने आपको बता दिया कल की अखबार कैसे पढ़नी है. जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो ओरिएंटेशन क्लास जाके देख लीजिए एक बार. उसमें आई हैव टोल्ड यू कि कितने टाइम में क्या चीज़ें स्किप करनी है. तो अखबार को भी इफेक्टिवली पढ़ना है. ऐसे नहीं आराम से एकदम धूप में बैठ के चेयर लगा के बैठे और आराम से, वैसे वाला नहीं पढ़ना है. पूरा ऐसे पढ़ना है. उसको किताब है वो आपकी, आपके लिए वो लेजर एक्टिविटी नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम. बिकॉज अखबार तो हमें ऐसे ही पढ़नी चाहिए. आप यूपीएससी दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तब भी अखबार पढ़नी चाहिए. यूपीएससी दे रहे हो फिर नहीं पढ़ रहे हो अखबार, तो दैट्स द बिगेस्ट क्राइम. दैट्स क्रिमिनल एक्ट. आई एम नॉट गोना कंडोन दैट एक्ट फॉर यू. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल यू गेट सिलेक्टेड, आपको रोज अखबार पढ़नी है. उसके बाद आप खुद छोड़ नहीं पाओगे. अगर आपने अभी एक हैबिट बन गई आपकी, आपको खुद नहीं छोड़ पाओगे, तो डू दैट. ठीक है? चलिए फिर, ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट गाइस. सी यू टुमारो. गुड लक. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, I was having one question. Yeah, please. Sir, actually, sir, like we are moving at this pace. So, sir, like, sir, I am targeting 2025 only. So, sir, will we be able to do this? We will finish the syllabus by March end. अभी पहले एक दो दिन में तो मैं, अभी मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, बिकॉज सबका पेस देख के चलना है. आगे वी विल हैव मैराथन सेशंस आल्सो. आपका मार्च एंड तक सिलेबस सारा हो जाएगा, उससे पहले ही कर देंगे मोस्ट लाइकली. आई वाज डिस्कसिंग विद अभिनंदन आल्सो कि वी विल फर्स्ट विल फिनिश द सिलेबस एंड देन हम रिवीजन का रगड़ा लगाएंगे कि फुल ऑन वन डे फुल पॉलिटी जैसे हो गया. सुबह से लेकर शाम तक बैठ के आपकी एक दिन में पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी, एक दिन में पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी. यू विल बी with us for that entire day. सुबह 8 से लेके शाम के 8, we will all be online there. We will be studying the entire subjects. So there are a lot of plans in the pipeline. Let's see. Let's take it one step at a time. तो सिलेबस की टेंशन मत लो.
जो आपको बताया जा रहा है वो आप करते जाओ, बस बाकी हो जाएगा, ठीक है ना। बी रेडी फॉर द ग्राइंड। अभी वी आर गोइंग स्लो जस्ट टू वार्म यू अप अ लिटिल बिट. This is a stretching. This is just a stretching. Yesterday was light. Today is a little bit more initiation. Going further, every day we will increase the level of, because concepts we have to study ना, उसमें आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा ज़्यादा, तो उसके लिए you need to be oriented to that. ठीक है, चलिए. Any doubts, anyone else? सर Okay, एक डाउट good. था सर. चलिए पूछ लीजिए. One final doubt, okay? सर जैसे कि आपने बोला ना सर, रिपोर्ट्स या कोट करने या कौन से क्लाइमेट के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सो सर उसमें कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है ना कि ये प्रोपोज्ड किया गया है, तो सर वो तो कंफर्म नहीं रहता, तो हमें जो कंफर्म है वो ये mention नो नो, प्रपोज वाला नहीं, जो रिपोर्ट्स हैं. ओके सर. मैंने बता दिया आपको, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे, बजट, दीज आर क्रेडिबल सोर्सेज. यूनिसेफ, यूनेस्को, उनकी रिपोर्ट्स को कोट कीजिए, ठीक है. जो एस्टैब्लिश्ड जो जर्नल्स हैं, कोट देम. ओके सर ओके, थैंक यू सर. अभी किसी का डाउट है, पूछ लीजिए लास्ट. नो सर. बाकी डाउट सब कल के लिए, ठीक है. चलिए, ऑल द बेस्ट. अभी अखबार पढ़ के आइए कल, वरना क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी कल. चलिए, गुड लक. बाय. ओके सर, थैंक यू. ओके, गुड डे.